So let's talk about the small intestine. ठीक है? The small intestine receives bile and pancreatic juice used to break down food, and it is 20 feet long and about 10-inch in diameter. ठीक है? The small intestine is divided into three following segments. You have the duodenum, the jejunum, and the ileum. So a duodenum is 5 to 7 meters long and is C-shaped. और ये अपर एब्डोमेन रीजन के नियर लाई करता है टुवर्ड्स द मिड लाइन. ठीक है. एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ काइम टेक्स प्लेस ओवर हेयर थ्रू certain enzymes called enteropeptidases or enterokinases, which are produced by the cells of the duodenum and activates trypsinogen to form trypsin. ठीक है ना. अब ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होती है, उस पे एंटेरोकाइनेज एक्ट करता है, वो ट्रिप्सिन बनाती है. ठीक है ना. ट्रिप्सिन क्या करती है? स्प्लिट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स. Then secretin is produced by intestinal mucosa on the entry of acidic food. Secretin activates hepatic and pancreatic cells to produce secretions. And secretin also inhibits gastric secretions. मतलब स्टमक की secretions जो हैं वो secretin की वजह से inhibit हो जाती हैं. Moving on to the jejunum. ठीक है ना. Mixing of the chyme occurs through the localized smooth muscle contraction in the wall of the jejunum. 90% of the nutrients are absorbed into the body by the end of digestion in this part of the small intestine. यहाँ पे मतलब majority absorption हो रही है. ठीक है ना. And then the food material moves to the ileum, the last portion of the small intestine, where the absorption of the digestion products takes place into the bloodstream. ठीक है ना. तो आपके जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो रहे हैं. एंड हाउ इज दिस प्रोसेस एडेड? It is aided because the surface of the ileum is provided with finger-like projections called villi. Each of these villi is composed of even smaller structures called microvilli that aid in the absorption by increasing surface area. Eripsin is produced and secreted by the intestinal glands in the ileum and the pancreas. और इसका ये फंक्शन होता है कि डाइपेप्टाइड्स या पेप्टोन्स जो होते हैं उनको फर्दर डाइजेस्ट करता है इनटू अमाइनो एसिड्स. सो लास्टली, a large portion of fatty acids and glycerol in the ileum enters into the epithelial cells of villi where they combine to form fats. These fats enter small structures called lacteals. Proteins in lymph vessels, that is also the other name. Basically, lacteals के अंदर आपकी lymph vessels contained होती हैं. So proteins and lymph vessels combine with the fats that have entered to form lipoproteins, and they pass into the bloodstream via thoracic lymphatic duct. So the food is propelled from the small intestine into the large intestine through peristalsis, the contraction of the muscle walls. And how are they going to contract? Look, here is a layer of thick, smooth muscle, and then here is a layer of thin muscle. ठीक है ना. और ये ऑल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. पहले थिक वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है तो थिन वाला रिलैक्स करता है, एंड वाइस वर्सा. और उससे देयर इज दिस वेवी मूवमेंट. ठीक है ना, जिसकी वजह से फूड आगे की तरफ चलता जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस.